iForest is an environment iForest is an environment research organization headquartered in Delhi NCR. We work across 8 states in the northern and eastern parts of India on a host of environment related issues such as clean energy, air pollution, and waste management. We work with governments, industry, and civil society to put out our research and develop solutions. But we are here for a very important conversation today. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि इसका संबंध हमारे जीवन से जुड़ा है. The WHO estimates that 7 million people yearly die prematurely because of air pollution worldwide. Another study shows that India accounts for 2 million deaths related to air pollution. So we know that respiratory diseases, cancer, diabetes, neurological disorders, and heart disease are all linked to air pollution. हमारा रिसर्च बताता है कि ये सिर्फ एक लार्ज मेट्रो सिटीज की प्रॉब्लम नहीं है. सच तो ये है कि भारत में वायु प्रदूषण हमारे छोटे एक्सपैंडिंग सिटीज को उतना ही इम्पैक्ट कर रहा है जितना दिल्ली की राजधानी को. So cities such as Patna, Guwahati, Meerut, Bhiwadi, Amritsar, and Baddi are severely polluted. In fact, the AQI across the Indo-Gangetic plains is really bad, several times over the WHO's permissible limits. So in any other country, this would be a public emergency. हमारा सोशल मीडिया अभियान स्मॉग टेल्स नो योर सिटी एंड व्हाट यू ब्रीथ इस चर्चा को दिल्ली की राजधानी से छोटे शहरों तक लेकर जा रहा है. We want to take air pollution from the realm of expert speak to daily conversations. We hope to see our colleagues, friends, and family talk about the data and science, the causes and fixes, because this awareness is really critical to demand for change. Through our social media campaign, we hope to educate citizens, shape public opinion, and importantly, create conversations between residents, academicians, pollution control boards, municipality, health experts, policymakers, and the media. And we are confident that these conversations can mobilize local action. मैं हमारे आज के पैनलिस्ट को स्वागत करना चाहूंगी who join us today to share their wealth of experience in combating air pollution. Mr. Ramprakash ji, founder Ratan Engineering Private Limited. He's also a mentor to Bhiwadi Integrated Industrial Association. Welcome, sir. Thank you. Ms. Abhi Garg, Senior Scientific Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, who's joining us from Kota today. Welcome, ma'am. And Dr. Keval Krishan Dung, MD in Respiratory Medicine, who's a consultant pulmonologist joining us from Kota, who has been heavily invested in making air pollution awareness a very much a part of his agenda. I'd like to welcome my colleague Pratima Singh, who's Director Air Pollution and Waste Management at iForest. She's going to be making a presentation of our findings and she will moderate the discussion today. And I'd also like to welcome the participants to this discussion. Please drop your questions in the Q&A box. We have saved the last 10 to 15 minutes of this webinar to take written audience questions. We are recording this webinar and this will be shared with key stakeholders and the local media. And with that, I hand it over to you, Pratima. Thank you, Shreya. Thank you for introducing our social media campaign, which is a very important platform for all of us to come together and discuss and deliberate on the challenges of air pollution. So I'll be sharing a small presentation on Bhiwadi, the analysis that we have carried out. Let me know when you see my screen. Are you able to see the screen? Great, thank you. So today our discussion is on Bhiwadi city. Bhiwadi is, almost near the Delhi NCR region, only 80 kilometers from Delhi, and it is growing rapidly in terms of small and large scale industries focusing on steel, automobiles, and electronics. A few of the studies that have carried out that were carried out by IIT Kanpur, they have identified that industrial pollution and pollution from dust contributes almost around 48 to 50% in the city of Bhiwadi, and because highway passes through most of the cities in Rajasthan, that contributes huge vehicular transportation share to the city also. Very interesting fact about Bhiwadi that I came to know that there are almost around 1,800 industries
in the city and has almost around 400 furnaces, large and small. So Pratima, can these are you some move of, your slide? I think you're still stuck on the cover slide. yeah, I'm just giving an introduction. So sorry. Yeah. So these are few of the facts, and considering that, rapid urbanization is happening, rapid construction work is happening, industries are going, it is one of the hub for institutional management, institutions, which has made it a place for, skill development, developing businesses. So all the factors are there to create pollution, but how do we solve the problem also we need to discuss. So again, taking you through few of the challenges. These are few of the pictures that I found on Bhiwadi. Very interesting. Industrial pollution is definitely high, and waste is a challenge. I did see dust storm because Great Indian Desert is there in Rajasthan, which covers almost 70 to 80% of the land area. So dust is definitely a challenge. The AQ, today's AQI is not very high, as during our initial discussion, Dr. Keval was mentioning that it rained yesterday and hence the pollution levels have come down. But since last couple of years, Bhiwadi has been in news due to pollution problem. And I've just taken screenshots of few news articles here. So definitely this city has really bad air pollution levels, and since not just now but since last couple of years. So our the research, that the small research that we carried out, I just want to take you through it. This is the city boundary of Bhiwadi. There are two continuous air quality monitoring stations. One is at Rico Industrial location, and one is at Vasundhara Nagar. This is a recent station that has been installed in 2024. Taking you all through the process that we have adopted. So we have collected data from the continuous air quality monitoring station, and the data was collected at 15 minutes interval from the CPCB database, and the data was analyzed for last 5 years using Python and big data platforms. We ensured that the data availability was good, and we have included those months and years where the data availability was more than 60%. Hence there are no errors or any gaps in the analysis that we have carried out. And then at the end, we have used Tableau, Power BI, and QGIS for our data analysis and visualization. So as you can see, this is the Rico Industrial uh, station, and this is the Vasundhara. For this year, for 2023, the concentration of PM 2.5 was around 96.8 microgram per meter cube, and for PM 10, it was 209.6 microgram per meter cube. These are the two continuous air quality monitoring stations. However, there are three manual stations as well, and so the total number of monitoring stations for the city are five. Uh, According to the population census, the population of Bhiwadi is around 1.5 lakhs. So, as per CPCB standards, Bhiwadi city has adequate number of monitoring stations. Looking at the annual average concentration for various pollutants that we have analyzed, we can see that PM10 levels and PM2.5 level exceed the CPCB standards. PM10, it exceeds by almost more than 3 times, and PM2.5 around twice the standards. However, NOx, SOx, and ozone, they are way below the CPCB standards, so they are within the limits. So that's a good point. However, when we looked at other cities in the state of Rajasthan, we looked at other 21 cities, we saw that Bhiwadi is the most polluted city in the entire Rajasthan, which is definitely a concerning situation, and we need to understand why is it happening. Considering that there's a lot of
construction happening, urbanization is happening, industries are increasing, vehicular movement, waste are all problematic areas. But why is Bhiwadi so high compared to other cities in the state of Rajasthan? We looked at the annual trends from 2019 to 2023, and some very interesting facts. We saw that since 2019 the pollution levels have decreased in the city of Bhiwadi. Only we saw a rise in year 2021 for PM10 and PM2.5. However, since then the pollution levels have decreased. But even though there has been a gradual decrease every year, still the pollution levels for PM2.5 and 10 are way high, compared to the CPCB standards. We also looked at the monthly trends for PM 2.5, 10, SOx, NOx, and ozone. And we can clearly see here very interesting trends that during winter months, the pollution concentrations are really high compared to the monsoon months, that is from May to June to September. However, for the ozone, the concentration levels were high during the summer months. And this has been a trend that, winter season, we all know that solid fuel is being used to keep ourselves, especially the people who are on the road, who are, street vendors and security people, they burn solid fuel to keep themselves warm. So hence, high pollution level during the winter season. We also looked at the hourly trends, and very nice, interesting fact came out that the peak hour was observed during 7 to 10 in the morning, and then again 7 to 11 in the evening time. However, if you see, the ozone peak was observed during the afternoon time. This is a very interesting fact. During the morning and the night time, the ozone is really less. However, during the afternoon, the ozone level increases. So, looking at the highlights, we found that Bhiwadi is the most polluting city in the entire state of Rajasthan. Though, the average PM 2.5 concentration has decreased by 27% since 2019, but it is still twice the CPCB standards. And similarly, PM10 concentration, though it has decreased by 9%, it is still, more than 3 times higher than the CPCB standards. There's definitely decrease in the ozone and SOx concentrations. And we saw that morning and evening peak hours for PM 2.5 PM and PM 10. However, ozone was really high during the summer months. These are some interesting facts, and we would now start our panel discussion where we will discuss more on what is happening in the city of Bhiwadi. So I welcome panel members again, Dr. Keval Ramprakash sir and Ms. Abhigar ma'am, to our discussion. Thank you for being part of this panel discussion. I'll start with Ms. Abhigar ma'am. Hope you're able to hear me. I would want to understand from you, considering the pollution levels that we saw in the city of Bhiwadi, what are the challenges as a regulatory body? What are the challenges Pollution Control Board has seen, and what are the actions taken by the state pollution control boards for the city? Could you please unmute yourself and speak? Ms. Abhika, are you able to hear me? I think there is some problem. There's a problem. Karan, can you please call her up and ask her the question? And maybe we Yeah, can come back to her. I'm getting Yeah? on the call with her. Yes. Yeah. So okay, then let me go to Yeah. Ram Prakash sir. Yeah. So very interesting fact that there are almost around 1,800 industries and almost 400 furnaces which use solid fuel like coal and wood in Bhiwadi, and it is fastest growing industrial town right now because it is also very near to
to Delhi NCR, and hence Correct. there's a lot of incentive and subsidies also provided to establish your industries and businesses in the city. You being a part of the industrial association in Bhiwadi, could you please help us explain like what is happening in the city and why there is no control on the industrial pollution? Uh, Good afternoon, everyone. Thank you for inviting me. I'll share a few things about Bhiwadi. I'm in Bhiwadi since 1987, so almost about 45 years. Uh, there are many things, and I, as an industry person, feels that pollution at Bhiwadi is hyped. The levels and the bad condition is hyped more than the actual. There are two things. One is solid waste management. Number two is wastewater problem. And third is the air pollution problem. Since this seminar today is more focused on air pollution, I'll first focus on air pollution and then come to other pollutions also, time permitting. Air pollution, as far as industry is concerned, the only source can be furnaces from where we have some smoke coming out. It is correct that in the period prior to 21 or 20, there was not much of thinking or talking about this pollution. That time, most of the furnaces were using coal or oil fired furnaces. Then, by sustained pressure or sustained helping the industry and the regulatory Rajasthan Pollution Control Board, joint effortly by the board and the industry associations. All the furnaces, please note, all the furnaces who are using these fuel have shifted to migrated to cleaner fuels like LPG or PNG. Although at a very high cost, rendering the industries at Bhiwadi uncompetitive as compared to neighboring states. But still, the industries at Bhiwadi, they cooperated slowly and slowly by persuasion. Everyone has shifted now. And I'm sure, I'm happy to note that this has been recorded by you also. There is a drop by the industrial pollution. And I'm sure this is because of that only. Now, most of the industries, they use only the permitted fuel. Okay. The other part which contributes to air pollution is the vehicle pollution and also the bad roads contributing to air pollution. There was a study which was got conducted by Rajasthan Pollution Control Board. Let me see if I can show you. Can you see something? Nothing as of now. Nothing as of now? No. Okay. I don't know how to show it. I have a report. It is July 2019. Mm-hmm. So it was done by IIT Kanpur on behest of Rajasthan Pollution Control Board. Okay. You see, whenever there is a grab, Bhiwadi is the most affected area. Mm-hmm. So we are concerned about it. Okay. And at the same time, there are two, three very important points which this study had showed. Okay. Oh, because of background, probably you cannot see anything. Okay. Right. Yes. Now, what this study says that out of the मैडम hello, ज्वाइन कर लिया उन्होंने हेलो Right. Abhi Karan ma'am, could you please put yourself in mute as of now? I'll come back to you. Yes. Okay. Yes, sir.
Please go ahead. Now it says overall baseline emission inventory for Bhiwadi city, kilograms per day. Vehicle is, this is PM Hello. 2.5. Vehicle is 1336. Road dust is 5239. Industrial is 2921. Okay. So this indicates that the road dust and vehicular pollution are the main culprit. As far as the industries are concerned, as I have told you, from 21 to 23 or maybe up to 22 itself, all the industries have converted themselves into cleaner fuel. So now there is no industry are not responsible for any pollution. Moreover, I would like to correct you. It is not only 1,500 or 1,200 industries. Bhiwadi has estimated 6,000 industries, and it is a growing area. Are you all listening? Is that right? Yes. Okay. So it is a large population and growing, and Bhiwadi is the highest contributor to the national as well as state exchequer by way of taxes because of the such huge production and revenue. As far as citizens are concerned, they are all very aware. We have other groups, Rotary Club, Bharat Vikas Parishad, keep on discussing because naturally, as you know, this is a life-threatening problem. So today, even a child going to a school is as much aware of environment, whether it is air pollution, solid waste pollution, or wastewater treatment. So everyone is aware. And as you have also indicated, please correct me if I'm wrong, the pollution levels are more in the morning between 7 to 10 and also in the evening between 7 to 11. This is the most traffic time when the workers, staff will go to the factories. This also shows that increase in pollution is on account of vehicular and road dust. And for vehicle pollution, maybe the change of fuel, as Delhi government has done, replaced all the diesel into gas, and maybe now the electric is the in thing now. And about the road dust and all, the government has to do something about it. We have been keeping them, asking them to improve the road condition, improve the side bumps. No, let us keep all the kacha roads into pakka roads, black roads. So these are the efforts being done by various bodies. And of course, the cleanliness corporation should also be roped in. And Prakash ji, the, I'll come back to you on ji, discussing the solid waste management and the road infrastructure. Let me go back ji. to Ms. Abhi Garg. Ms. Abhi Garg, ma'am, are you able to? Pratima, he's Mr. Amit Soni is also there, who heads the Okay, pollution state pollution control board in Kota. So he's right. joined us. Yeah. Okay. Welcome, Mr. Soni. How are you? Thank you, ma'am. I'm fine. What about you? Great. Happy to have you. I'm also doing good. Thank you I'm so much. sorry, I was unable to join due to some urgent work. Right. Uh, No worries. Sorry to bother you. I see you are outside the office and we will be asking you some difficult questions considering that you are from the State Pollution Control Board and a regulatory body is the one which gets targeted when we talk about air pollution. oh, So my apologies are in line, but let me ask you some difficult questions that we have been seeing that Bhiwadi is always in the news because of the air pollution levels.
and it was also considered, I mean, targeted as the most polluted city in the world. Yes, yes. I was just talking to Ram Prakash sir, and he mentioned that most of the industries have shifted to cleaner fuel, LNG and LPG and PNG, the furnaces, and however, there are new industries that are, coming up in Bhiwadi city. And what type of steps are taken to ensure that those industries will not pollute the city? Well, actually, as you have said that these industries are shifting on cleaner fuel, and as you know that presently the GRAP is going on. So there are so Mm-hmm. many implications on them, so many prohibitions on them to shift on cleaner fuel, not to operate boiler and other things. Actually, I am from Kota. I have been posted at Kota. So about Bhiwadi right now I am not so much aware. However, about Kota, you may ask something. Okay, I Mm, would in general I would want to know, like you said that GRAP has been implemented, but yes. does like construction activities, use of diesel generators and other small things, are they also restricted during the GRAP time? Yes, yes. Even diesel generator, open burning, construction activities, that depends on the stage of GRAB 1, 2, 3, 4. So on the level of pollution, the Commission for Control of Air Pollution decide which grade of GRAB they have to implement. Mhm. Right. So at present, what is the GRAP stage that has been implemented? Uh, uh, when I talk about quota, there is no GRAP here as pollution level are not so much high there. However, Okay. to mitigate pollution, we are also taking so many steps proactively. Like if we talk about the sources of pollution, then first one is industry, we can say. But the participation, the contribution of pollution of industry is not more than 7 to 8% in total pollution. Recently, we have conducted a study with IIT Jodhpur, and we came to know that the most of the pollution is from vehicular emission, road dust, and open burning. So to mitigate, actually, as you, I don't know whether you know about it or not. In 15th Finance Commission, Kota city is getting around hundreds of crore rupees to mitigate air pollution, and that fund is directly going to the Nagar Nigam. The Nagar Nigam is taking care of all the road dust to suppress it with the water sprinkling and to control open burning, mechanical dust sweepers, road paving, plantation. These steps अमित जी are मैं आपसे अमित जी मैं आपसे ये जानना mm, चाहूंगी, जब रोड mm, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, when the roads have lot of potholes and कच्चा roads, then how are you operating mechanical sweepers? no the मतलब ये दोनों चीजें ना मैडम साथ के साथ जा रही है। मतलब जहां पे अगर रोड नहीं है तो उनकी पेविंग का काम भी हो रहा है। जहां पेविंग है और रोड साइड डस्ट है उसको सप्रेस करने के लिए आइदर और उसको कलेक्ट करने के लिए मैकेनिकल स्वीपर या एंटी स्मोक गन्स का यूज किया जा रहा है। ओके, आपने ये भी बोला कि वाटर स्प्रिंकलिंग भी हो रही है, लेकिन वाटर स्प्रिंकलिंग तो इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, आप जब वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं वो इवापोरेट हो जाता है पानी, एंड अगेन देयर विल बी डस्ट रिसस्पेंशन, सो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पॉलिसी। यस यू कैन से दैट मतलब कुछ तो परसेंटेज मैडम इससे रिड्यूस होता है। अगर मैंने कहीं पे वाटर स्प्रिंकलिंग करवा दिया है तो आप मान के चलिए कि इवोपरेट होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि उसकी साइकिल्स बढ़ा देते हैं। दिन के अंदर 3 4 बार हमने वहां पे करवा दिया तो उससे फर्क तो पड़ता है, नो डाउट। तो बट इसमें आप कंटिन्यूस लोग प्रोसेस नहीं ट्रीटेड है। वेस्ट वाटर जो ट्रीटेड होता है वो इस्तेमाल करते हैं या फ्रेश वाटर यूज करते हैं? मैडम यहाँ पे एसटीपीज हैं, उनके पानी का भी हम इसके अंदर यूज करवा रहे हैं। ओके, एंड जैसे मैंने आपको जो सवाल पूछा था कि इंडस्ट्रीज अभी भी काफी बड़े तादाद में बढ़ रही हैं, देयर आर लॉट ऑफ सब्सिडीज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू industries, there are tax holidays that are being provided to set up new industries.
So, what are the regulations in place to ensure that the industries don't pollute? मैडम हमारे रेगुलर इंस्पेक्शन हम इंडस्ट्रीज के करते हैं और Mm-hmm. नंबर के ऊपर कर सकता है क्योंकि ऐसी कोई प्रोहिबिशंस है नहीं। Mm-hmm. एंड एज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अपने को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो इंडस्ट्रीज के ऊपर रोक लगाना जो हमारे समझ में आता है, Uh-huh. उनको हम प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के साथ में चलने के लिए इंसिस्ट करें, ये हम लोग जी. करते हैं, जिसके लिए Okay. रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं। उसके लिए अगर वो नहीं चलाती है तो हमारे पास में पेनल्टी प्रोविजंस भी है, Okay. उनके क्लोजर के ऑप्शंस भी है, तो Uh-huh. ये सब हम साथ में एक साथ के साथ करते हैं। Okay. मैम, इसमें Okay. इसमें मैं कुछ बोल रहा हूँ इंडस्ट्री का पक्ष रखने के लिए। Uh, सर, ये yes. रेगुलेटरी बॉडीज तो, इंडस्ट्रीज तो सॉफ्ट टारगेट हमेशा होती है, और Uh, उसके ऊपर तो Ram ऑलरेडी। Prakash sir, I'll come back. Point. ओके, सॉरी। Yeah, please let me just finish with Amit ओके। Soni sir. Yes, Mr. Soni, you were saying that penalty and closure has also been considered for the industries. So, यस, can you just give me a few examples? What kind of industries usually you penalize and have given closure notice till now? What type of industries? Chemical or electronics or any kind? बेसिकली मैम जो एयर और वाटर पॉल्यूशन है, दोनों को लेकर ही हम कार्रवाई करते हैं। Mm-hmm. और अभी रिसेंटली इंडस्ट्रीज के नेम तो मैं कोट नहीं करूंगा, ठीक नहीं रहेगा, बट नहीं अभी नहीं, एक बहुत नाम बड़ी। नहीं, कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज क्या पैदा करती थी ये इंडस्ट्रीज? सॉरी मैम, कैन यू प्लीज अगेन रिपीट द आई क्वेश्चन? हाँ सोनी जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये किस टाइप की इंडस्ट्रीज थी, केमिकल इंडस्ट्री थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, या रबर, किस, क्या पैदा करती हैं ये ये मैं इंडस्ट्रीज? ये केमिकल भी है मैडम इसके अंदर, और सीमेंट प्लांट्स भी है, ओके. और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती है जो कि हजार्डस वेस्ट को प्रोसेस करती हैं, ओके. उनकी रिसाइकलिंग में है, तो उनके ऊपर जो जैसा उनकी नॉन कंप्लायंस मिलती है उसके हम्म. अकॉर्डिंगली हम आगे एक्शन लेते हैं। ओके. ओके. ठीक है. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन सारा जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो म्युनिसिपल बॉडीज के पास होता है. तो क्या म्युनिसिपल बॉडीज और आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं एक्शन आइटम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या आप लोग उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए? मैडम हमारी रेगुलर मीटिंग होती है इसको लेके। एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज ओनली नॉट द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, है ना, तो हम्म. रोड डस्ट भी है, इसको अब कंट्रोल करना है। तो केवल हम नगर निगम भी नहीं है, इसके अंदर यूआईटी भी आता है, आरटीओ भी होता है, इवन ट्रैफिक पुलिस भी होती है इसके अंदर। तो सभी डिपार्टमेंट की मिला के एक हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, जिसकी ओके. रेगुलर मीटिंग हम करते हैं। और जी. मीटिंग में जो भी आगे आउटपुट निकलता है उसके हिसाब से हम जी. आगे एक्शन लेने के लिए डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। ओके. अमित सोनी, होप आप बने रहेंगे क्योंकि मेरे पास एक दो सवाल आपके लिए और हैं. मैं तब तक डॉक्टर केवल हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी. मैम मेरी सबऑर्डिनेट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर अभी गर्ग, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मेरे को अभी जी. कहीं रिसेंटली निकलना पड़ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना, वो अभी श्योर. आपको ज्वाइन करेंगे, है ना, ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो, मैम। राइट. Dr. Keval, coming to you, we have understood, there are a lot of sources of pollution in the city, vehicular pollution, industries. Though they have, adopted to cleaner fuel, but there are a lot of more new industries that are coming up, and waste burning has been a constant problem. And we know now that air pollution has severe health impacts. So, as an health, expert, what would be your suggestion on what are the steps that the citizen groups can ensure to take care of themselves? Sir, you are on mute. Yeah, first of all, I'm highly thankful to all of you for inviting me here.
और आपने कहा कि रेगुलेटरी बॉडीज को क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए रिगार्डिंग द हेल्थ हजार्ड्स, और ये अभी श्रेया मैम ने आपने बताया कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन 2 मिलियन डेथ होती है इंडिया के अंदर, और 429 डेथ डेली होती है बच्चों की, ऑलमोस्ट डेली, बिकॉज ऑफ द PM 2.5 लेवल की वजह से। और जो रेगुलेटरी बोर्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज वेरी हाई, जो कि उससे लो होने चाहिए। 30 PM 2.5 का लेवल है, बट अगर 5 से भी ऊपर जाता है तो मोर्टेलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिसेंटली अभी दिसंबर में स्टडी आई है लैंसेट की, उसमें ये बताया गया कि आपका 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एरिया में अगर बढ़ता है तो वो 1.4% मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो पॉल्यूशन किसके कारण है या किसके कारण नहीं है, ये तो एक अलग कंसर्न हो गया, लेकिन अल्टीमेटली पॉल्यूशन तो है। और जो अपने पास जो इसका बर्डन है दैट इज टू हाई, और बर्डन इतना है, ग्लोबल डेथ जो है उसका 1/4 इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। मतलब 80 मिलियन, जो 8 मिलियन डेथ हो रही है उसमें से 2 मिलियन डेथ आपकी इंडिया में हो रही है। तो इंडिया इज बर्निंग लाइक एनीथिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोविड से ज्यादा डेथ हो रही है हर साल अपने यहाँ पर, अगर आप उसको कंपेयर करें तो ये स्टैंडर्ड है डेथ के, ग्लोबल वार्डन के। और जहाँ तक PM 2.5 और PM 10, ये सब आंकड़े हैं बेसिकली, लेकिन इसको अगर अपन ने कम नहीं किए तो ये आगे जा करके और मुसीबत का कारण है। PM 2.5 है क्या चीज, ये लेमैन को भी जानना बहुत जरूरी है। PM 2 लेवल इज द मोस्ट हजार्डियस पोल्यूटेंट, जो आपके एयरवेज के अंदर जाकर के एल्वेलाई को क्रॉस करता है एंड गोज टू द ब्लड स्ट्रीम, और अल्टीमेटली वो ऑक्सीडेटिव इंजरीज करता है, तो हर एक ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है। इट इम्पैक्ट्स ऑन ब्रेन, हार्ट, किडनी, एवरी ऑर्गन पे ये जाकर के वो करेगा। और कार्डियक जो डिजीजेस हैं ऑलमोस्ट उसमें एयर पोल्यूशन का 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही स्ट्रोक्स के अंदर 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर 70% कॉन्ट्रीब्यूशन PM 2.5 का है। और जो मोर्टेलिटी इंडिया में है, इंडिया टॉप्स इन द रेस्पिरेटरी मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड। तो ये ओवरऑल मतलब हेल्थ हजार्ड्स जो इस पॉल्यूशन की वजह से आते हैं, स्टैंडर्ड जो है कि आपका 40 से ज़्यादा होना चाहिए या 30 से ज़्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट ट्वाइस और थ्राइस है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड लेवल। Right. Sir, I also understand that you have been doing your own research around Rajasthan, around Kota. So, आपके observations क्या हैं? लोग यहाँ पे किस चीज से ज्यादा impact हो रहे हैं? जैसा मिस्टर अमित सोनी ने कहा और प्रकाश सर ने भी कहा कि ट्रैफिक कंजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, और जो हमारे RTO सिस्टम है या ट्रैफिक सिस्टम वो अच्छे नहीं है। और कोटा एयर पोल्यूशन, यूँ कहना चाहिए कोटा हैज़ बीन अंडरगोन लॉट ऑफ रिवैम्पिंग लास्ट 12 ईयर्स। बहुत सारे रिवैम्पिंग में गया है, आपने सुना भी होगा अबाउट सिटी पार्क, रिवर फ्रंट। तो ये रिवैम्पिंग जब हुई तो कंस्ट्रक्शन हुआ, और इवन कोचिंग कॉलेजेस, तो जब ये रिवैम्पिंग और ये सब बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो पोल्यूशन बहुत होता है। और जो ट्रैफिक है वो दूसरा एक कंट्रीब्यूटर है। वी हैव थर्मल प्लांट आल्सो, थर्ड वन। एंड फोर्थ, इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं है, अमित सोनी जी ने बताया इनका। ऐसे ही प्रकाश सर ने भी कहा कि रेगुलेटरी बोर्ड का ज़्यादा ध्यान इंडस्ट्रीज पे रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, पोल्यूशन को कंट्रोल बोर्ड का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिए जहाँ पे वो, जैसे सोनी सर ने कहा कि हम कमेटी बिठाते हैं ये होता है, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली ऐसी कमेटीज होनी चाहिए जो ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने में मदद कर सके। आपके जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन है, इनको कैसे करना है, आपका जो बर्निंग है, मतलब ओपन बर्निंग, कचरे को हम जलाते हैं, मतलब अब सरप्राइजिंग इतना ज्यादा है कि कचरा सड़कों पे जलाया जाता है कलेक्शन की जगह पे, है ना। और साथ साथ इवन कोचिंग कॉलेजेस हैं, उनकी मैस हैं, मैस जो होती हैं वो बेसिकली ऑन रोड है, और वो वहां पे बैठ के भट्टी जला करके आप खाना बनाते हैं। तो ये जनरेटर्स, जो डीजल जनरेटर हैं वो सड़कों पे रखे हुए हैं लोगों ने। हम्म, तो इंक्रोचमेंट
itself reduces the speed of traffic. अगर ट्रैफिक की स्पीड कम होती है तो उसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा और सड़कों पे होता है, और वो AQI को बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह से Right. कुछ सर्किल्स पे इंक्रोचमेंट इतना होता है कि वो जो सर्किल है उसी पे बैठ करके वहां तो सामान बेच रहे होते हैं, Right. है ना। और उस सामान को खरीदने के लिए कौन उतरते हैं? हम लोग ही उतर रहे होते हैं, और हम वहां तक ले जाते हैं अपने ट्रैफिक को या अपनी गाड़ियों को कि शॉप वेंडर के सामने उतर के और उस सामान को खरीदते हैं, और गाड़ी भी चलती रहती है और सामान भी खरीद रहे होते हैं। तो Right. दैट इंक्रीजेस द AQI लेवल सो मच, है ना। अभी मैंने रिसेंटली, अमित सोनी जी अभी है नहीं यहाँ पे, AQI लेवल जो हमारे यहाँ मेजर किए जाते हैं 3 सेंटर पे किए जाते हैं, और मैं जाके वहां पे करता हूँ जहाँ ट्रैफिक होता है। तो उनके जो लेवल है और मेरे जो मॉनिटरिंग लेवल आ रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट ट्वाइस या थ्राइस आ रहे होते हैं। हालांकि मेरा मॉनिटर जो है वो एक पोर्टेबल मॉनिटर है, वो इजीली कह सकते हैं कि इट्स नॉट ए गुड मॉनिटर, हमारे मॉनिटर ज़्यादा अच्छे हैं, बट ये डिफरेंस डेफिनेटली होता है। और AQI लेवल बढ़ रहा है। 2018 की जो WHO की स्टडी है कोटा का, उस समय AQI लेवल 150 होता था, आज के टाइम पे 200 अबाउट चल रहा है। तो ओवरऑल वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द एयर पोल्यूशन, और इस मतलब इसमें बहुत सारे कुछ करने की जरूरत है सबको मिलकर। Right. Thank you, Dr. Keval. I'll come back to you. Over to you, Ram Prakash sir. Are you there? Gigi, I'm here. Ji. Right. Sir, you were mentioning that solid waste is also a major problem and the road infrastructure. So I want to understand, more on that, because I also came across some facts where it said that, all the waste that is being generated by the industries, they don't segregate it, and all the wet waste from the industries, all the other hazardous waste, it gets just burnt and it creates lot of toxic pollution. So if you could elaborate on this. Uh, I'll. I would like to separate these two things. One is residential, Right. solid waste coming out of residential or commercial activities. Right. Other is industrial. Right. In industrial, solid waste will come through canteens of the units, big units, which are very few, but Right. most of them are aware. Okay. And either they have a composting plant Mm-hmm. or they give their leftovers to piggery Hmm. farms. Hmm. So there is no, I would say, minimal contribution of the industries on account of solid waste. Then Okay. comes this hazard. Again, as I've been saying, that regulatory bodies Mm-hmm. exercise a lot of pressure, Mm-hmm. like uh, penal action and closure actions, and industry being the soft target. So there is no possibility of such waste going to the open. It is Mm-hmm. only the other bodies on which the regulatory bodies are not able to exercise their penal action, like Mm-hmm. municipalities. Hmm. See, except that they have a meeting, they will issue some directions which are never followed. Sorry to say. Mm-hmm. CAQM issues directions, graph 4. You cannot DG sets. DG sets are an alternative to regular power. Hmm. Why should the regular power go away? Right. I Very have important point. I have heard that in the last few years, quota has improved significantly as far as power cuts are concerned. Mm-hmm. There are no power cuts. Hmm. No industry would like to start a DG set. It's a burden, financial burden. It is only in emergency that we have to start the DG set. Hmm. We are of the opinion that DG set should not be banned even during GRAP because it Okay. creates other problems. Mm-hmm. So this is my viewpoint. As far as industries are concerned, regulatory bodies are really harsh on them.
I just want to understand further, why do you say that during Grab DG set should not be stopped? What kind of burden are they creating? Industries are closed. Yesterday night at 10 o'clock, Grab 4 is invoked. Mm-hmm. How can I close my industry at night 10 o'clock? Do I tell my workers to go away? And Mm-hmm. do you want me to pay for them? How can I do it? I pay for their insurance. ESIC, Employee State Insurance Corporation. Why doesn't the government come forward? Okay, whatever chutti you do and your employer is not able to pay, we will pay you out of that ESIC fund. How can any industry work like this? Today closer, tomorrow open. Today closer, tomorrow open. No industry can work like this. And as I was mentioning you, this is the study. Mm-hmm. This study says the effect of air pollution is not beyond 25 kilometers. Mm-hmm. We have to save Delhi, yes. And during this period, the air flows from Delhi southwards. Right. Even if Bhiwadi is bad, there is no possibility of Bhiwadi poor air affecting Delhi. Please try to appreciate this. Mm. Air from Bhiwadi cannot travel to Delhi. Right. Why should Bhiwadi be affected by GRAP when the study says the impact cannot go beyond 25 kilometers? Bhiwadi is 70 kilometers away from Delhi. We are also as much concerned. And whenever we do comparison between CAQM of Delhi and Bhiwadi, Bhiwadi scores a shade better, not worse than Delhi. This is But the Ram statistics which are Prakash being sir, shown to us. yeah. Ji. Ryan Prakash sir, I want to highlight the fact that yes, I understand that you represent industry and people who are working in this industry and their livelihood is impacted. But considering when the city is grappling with bad air pollution levels, when there are elderlies and children who are impacted, then doesn't it become a collective responsibility of everyone to ensure that pollution levels don't go high, and shutting down an industry for a day or two would be helpful? Ma'am, there were times when the industry was shut down for a week. Even during that period, the air quality did not improve. What Mhm. does it mean? It We means all. the AQM bad is not because of the industry. How will closure of the industry improve the AQM? I fail to understand. All the industries which are working, they are following the norms. Their pollution control measures are in order. They are working. We are as much concerned about our own health and our Right. children's health and our Right. elderly people. मतलब भिवाड़ी में भी इंसान रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली वाले कोई ज्यादा हैं, लेकिन ठीक है, दिल्ली दिल है, हमें दिल्ली को बचाना है, लेकिन लॉजिक तो हो। मेरी हवा जब उधर से जा ही नहीं रही उस तरफ, तो भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज को बंद करके क्या लाभ होगा? आई फेल टू अंडरस्टैंड। देयर आर अदर It's मेजर्स। about सरकार सरकार कोई खींच नहीं पा रही है। सरकार कॉरपोरेशन को नहीं खींच पा रही। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं करते हो? जो okay. घरों से पानी निकलता है वो Mhm. इंडस्ट्रियल पानी से कहीं ज्यादा खराब है, माइंड यू। आजकल Right. का लाइफस्टाइल, आजकल के जितने ज्यादा केमिकल्स हमारे खाने में आ गए हैं, उन Mm. सबको जो हमारे घरों से पानी निकलता है वो भी उतना ही खराब है। अगर हम Definitely. समय रहते एसटीपी नहीं लगाते, जो एसटीपी लगे हुए हैं उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, क्या होगा? Right, right. No, very, very valid and pertinent points on like solid waste is a huge problem, and municipal corporations are responsible to ensure that the open waste burning does not happen, and the road infrastructure needs to be improved, as that came out in our discussion. But yes, I'll come back to you for final comments.
Let me go back to Abhi Garg, ma'am. Are you able to hear me now? Are you there? Yes, ma'am. Okay, great, wonderful. Finally, we have you and you're able to hear us. Well, actually, I have changed my place to attend. Thank you so much for all the trouble you have taken, and finally you have changed the location also. I would want to understand, ma'am, like pollution control board, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज मॉनिटरिंग तो हो रही है, ठीक है, वो हम भी समझ गए, लेकिन उसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों के में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? मैम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईईसी एक्टिविटीज हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें जैसे जी मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। और जैसा कि होता है कि अगर हम बच्चों को चाइल्डहुड में ही, जैसे अभी सॉलिड वेस्ट की बात हो रही थी, तो जी उसके रिगार्डिंग जैसे डिफरेंट स्कूल्स में बच्चों को एजुकेट करते हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें बेसिक लेवल, हम लोगों का मानना ये है कि अगर हम उन्हें बेसिक लेवल पे ये चीज बता देंगे ना, तो वो उनके वो रूटीन में आ जाएगा। करेक्ट उनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और उनको फिर अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा कि आपको ये करना है या इसको ऐसे सेग्रीगेट करना है। तो इस तरह राइट की एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं। राइट 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 वंडरफुल। हमारे इस कैंपेन का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अब बच्चों को जाके तो नहीं सिखा सकते, लेकिन जैसे बात हुई थी कि पीएम 2.5 भी समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि एयर पोल्यूशन कैसे हमें इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम सिंप्लीफाइड वर्जन में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, डॉक्टर केवल की भी, डॉक्टर मिस्टर राम प्रकाश की भी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी, कि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एयर पोल्यूशन की चर्चा की जाए अलग अलग स्तरों पे। आप लोग स्कूल्स में कर रहे हैं, वैसे ही राम प्रकाश जी अपने इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं कि वेस्ट नहीं जलाना या कुछ भी कूड़ा जो पैदा हो रहा है उसे नहीं करना है। ग्रेट। अभी जी मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि एज एन रेगुलेटरी बॉडी, आप लोग इंडस्ट्रीज को तो देखते ही हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीजें आपके निरीक्षण में आती हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस एज अ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डू यू फेस इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन or ensuring implementation is happening in an efficient manner? मैम, अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका एक Mm-hmm. कोऑर्डिनेशन का इश्यू थोड़ा सा रहता है। क्योंकि आज सब लोग इतने ओवरलोडेड हैं और रिसोर्सेज कम है। तो एक जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड होकर एक लाइन में वर्क करें, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट और एक हमारे लिए चैलेंज रहता है कि कभी हम लोग किसी वर्क में बिजी हैं, कभी वो लोग बिजी हैं, तो कहीं कहीं एक जॉइंट एफर्ट वाली जो चीज होती है, वो कहीं कहीं लैक करती है। जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव रेज्ड, लेस रिसोर्सेज। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे पोस्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निकलते हैं, लेकिन उतने लोग काम नहीं कर रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, खाली वैकेंसीज रह जाती हैं, एंड इसीलिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं और फिर हमारा सारा काम डिले होता रहता है। तो क्या इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ कर नहीं रहा है कि नहीं मतलब? मैम, अभी वैकेंसी और रिक्रूटमेंट को लेकर चल रहा है प्रोसेस, और वो बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। Okay, great. This is a positive thing we are hearing, and hope so that we get more technical people who can handle the pollution problem at the pollution control boards. Great. आप please बने रहिएगा. I'll come back to you for the final comment. Over to you, Dr. Keval. I would want to understand from you one last question, that we know that burning solid fuel is a challenge when it comes to cooking, and especially the mother who is cooking, and the children around her are affected the more. And just talking about the larger picture in Rajasthan and in Haryana, Punjab, UP, Bihar, people still use solid fuel for cooking. So what do you want to convey a message, like what should be the steps towards ensuring that we don't use solid fuel for cooking? You're on mute, sir. आप सभी ने दाल बाटी चूरमा खाया होगा राजस्थान का। जी ये सॉलिड फ्यूल पे बनता है, बायोमास फ्यूल पे बनता है। और टेस्ट ऐसी चीज है, आदतें ऐसी चीजें जो सुधारे नहीं सुधरती। और बेसिकली रूरल एरिया में सबसे ज्यादा सॉलिड फ्यूल यूज होता है।
और बायोमास फ्यूल यूज होता है, और उनका कहना है क्योंकि वो चीपर है। और दूसरा रीजन ये कि हम लोग ऑलमोस्ट एवरी थर्ड फीमेल फ्रॉम द रूरल एरिया इज अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिनकी ओके। उम्र 50 साल से ऊपर है। मैं ऑलमोस्ट कम से कम 10 से 12 फीमेल रूरल एरिया की देखता हूँ जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से लेकर के मेरे पास आती है। उनको ओके। समझा समझा के थक जाते हैं कि आप अपने स्वाद को मत देखिए। वो बोलते हैं, नहीं रोटी चोखी ना लागे, मतलब मेरे को रोटी में स्वाद नहीं आता अगर मैं गैस पे बनाते। दूध हमारे यहाँ 8-8 10-10 लीटर निकलता है, तो हम करें क्या उसका? वो गैस पे नहीं बना सकते, उबाल सकते उसको, तो वो चीपर पड़ता है वो फ्यूल। इवन उज्ज्वला आने के बाद भी इतना समझाने के बाद भी रूरल एरिया में मोर देन 90% बायोमास फ्यूल या सॉलिड फ्यूल यूज होता है। और वो इजीली अवेलेबल है, असेसिबल है, चीपर है, बट उनको अल्टीमेटली पे जो करना पड़ता है उसके लिए, दैट इज ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइम होता है। हमारी फीस, दवाइयों के खर्चे, सारे इन्वेस्टिगेशंस के खर्चे, ट्रेवलिंग के खर्चे, बेसिक चीजें जो है हम लोगों ने ही बिगाड़ी हैं। इंडस्ट्रीज ने पोल्यूशन नहीं लाया है, ये बात पक्की है। कम है उनकी वजह से पोल्यूशन। जो हमारी थ्योरीज हैं लिविंग स्टाइल की, वो बहुत खराब है। ट्रैफिक को कंजेस्ट करके रखना, आपके घर बायोमास फ्यूल को घरों में यूज करना, सॉलिड फ्यूल को यूज करना। मैंने आपको कोटा का उदाहरण दिया, मैस इतनी ज्यादा है कि लोग बाग सड़कों पे बैठ के खाना बनाते हैं सॉलिड फ्यूल, लकड़ी से जो है वो खाना बनाते, कोयले से आप खाना बनाते। तो ये डेफिनेटली इंडिया इज नंबर 1 जो कि इंडोर एयर पोल्यूशन के अंदर टॉप मोस्ट है। राजस्थान टॉप करता है ऑलमोस्ट। यहाँ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का जो प्रिवलेंस है दैट इज 15% इन इंडिया। और हिंदी लैंड स्पीकिंग जितने भी एरियाज है, हिंदी स्पीकिंग लैंड जितनी भी हैं, सब जगह टॉप करता है वहां पर। ये सारे स्टेट टॉप करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, क्योंकि ये बायोमास फ्यूल या सॉलिड फ्यूल फ्यूल यूज हो रहा है, डिस्पाइट राइट। ऑफ ये अपना उज्ज्वला के बावजूद भी। सब कुछ होने राइट। के इनके पास, सबके पास गैस कनेक्शन है, सब कुछ है, बट दे डोंट वांट टू यूज गैस, एलपीजी गैस एट होम। Right. This is definitely a concerning area, just because our behavior and customs and practices have been so that we are not able to shift to a cleaner technology. And I think a mass awareness program needs to be created specifically for cooking areas. And thank you for your comment, Dr. Keval. I'll go back to Ram Prakash ji. Ram Prakash ji, एक 30 सेकेंड्स में फाइनल कमेंट्स, अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है फॉर इंडस्ट्रियल association for all the people who are working in industries, what would that awareness step be? I will go to schools and make the children aware, because every child has a parent who works for the industry. If you teach one child, it will affect 4 persons. Generally, एक भाई बहन होगा उसका और 2 घर में। मैं इस Right. तरह के प्रोग्राम कम से कम भी पिछले 10,000 20,000 बच्चों के बीच में, कंपोस्ट क्यों करें, कैसे करें, क्या उसके जीवन में आपका प्रभाव हो सकता है, इस तरह के करता हूँ। राइट सर, लेकिन मैं इंडस्ट्रीज में जितने लोग काम करते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट दे आर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उनके लिए आप क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे? मैम, ये रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलर टाइम पर इंडस्ट्रीज के साथ में बात करते रहते हैं। ओके। जैसे पिछले 3 साल में कितनी इंडस्ट्रीज इंस्पाइट ऑफ द हाई कॉस्ट दे कन्वर्टेड देमसेल्व्स। राइट। और उसी प्रकार से जब वो इंडस्ट्री अपने घर में जाते हैं, तो वहां हम्म। भी उनके अपने अपने अलग अलग लेवल पर ये कार्यक्रम होते हैं कि अपने राइट। घर पर भी इस तरह के काम न करें। जी, wonderful. Thank you for your comment. I'll go back to Miss Abhi Garg, ma'am. Are you there? Yes, ma'am. Yes. In 30 seconds, what would be your next step in the coming year towards creating awareness on air pollution? हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। अभी गर्ग मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। आपको मेरी हाँ, मैं आवाज आ ये रही है? जानना चाहती हूँ कि आने वाले साल में आप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगी?
मैम फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस हम लोग वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं और हम लोगों ने अभी एक नया ये सोचा है कि पिक्टोरियल फॉर्म्स के अंदर हम चीजों को रिप्रेजेंट करें होर्डिंग्स बैनर्स के थ्रू, जिससे कि क्या कई बार क्या होता है कि कोई पिक्चर अगर हम किसी चीज को हम सुनते हैं तो वो फिर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन कई बार पिक्चर्स जो होती है ना वो उसका एक शेडो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। तो हम लोगों का Right. नेक्स्ट ईयर का यही है कि हम जो जितना भी अवेयरनेस करें उसको कहीं ना कहीं पिक्टोरियल फॉर्म में करें। Wonderful. This is brilliant. Thank you so much. I'll go back to Dr. Keval. Dr. Keval, please unmute yourself. Yeah, in 30 seconds, what are the steps in awareness, or what are the suggestions you would want to give to the citizen groups? बीइंग ए डॉक्टर मैडम, मैं तो पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, 12-13 साल से, और 20-22 साल हो गए ये करते हुए। और लिटरली डिसअपॉइंटेड भी हूँ, और शायद मैं मेरे को नाम जरूर मिला है, बट जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होती जा रही है। गवर्नमेंट को खुद को सोचना चाहिए। आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से वो रूरल एरिया को कैचमेंट एक एरिया बन सकता है। रूरल एरिया आपकी 66% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, और 46% आपकी नेशनल इनकम में रूरल पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो जब तक आप रूरल एरिया वालों को नहीं समझाएंगे, जितनी भी स्टडीज हैं सब अर्बन एरिया की स्टडीज हैं, चाहे वो Right. हेल्थ हजार्ड से ले लो, चाहे एक्यूआई Mm. मॉनिटरिंग से। आपने जाके एक्यूआई मॉनिटरिंग कभी झोपड़ी में चेक चेक किया है क्या? कभी Mm. रूरल एरिया में चेक किया है क्या? नहीं किया। बट वो पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, उनके एक्यूआई लेवल क्या होंगे अंदर इंडोर एयर पोल्यूशन के, कुछ नहीं मालूम हमारे को। तो सबसे Right. ज्यादा स्ट्रेस अपने को रूरल एरिया में देना पड़ेगा, और वहीं की लोकल लैंग्वेज में वहीं के जो लोकल जो लीडर्स हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं, हेल्थ वर्कर, उनको हमें अप्रोच करना चाहिए। पराली बर्निंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? पराली बर्निंग बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। स्क्रबर ऑफ थर्मल प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स इतनी बड़ी समस्या है। सब जगह वेस्टर्न कंट्रीज में हट गए, लेकिन इंडिया में सबसे नंबर पे वो पावर बनाते हैं, और हम लोग तो उसको सफर कर रहे हैं। और स्कूल्स का तो ऑब्वियसली बोला ही सही, बट कौन से स्कूल? वही अगेन अर्बन वाले में चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला इसका। आप जब तक रूरल के स्कूल्स में नहीं जाएंगे तब जा करके आपको ये बच्चे तो सब सीख लेते हैं। और ट्रैफिक रेगुलेशंस भी होनी चाहिए, ट्रैफिक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रेगुलेशंस होनी चाहिए। और इंक्रोचमेंट सड़कों पर से हटाना चाहिए ताकि ट्रैफिक स्पीड कम ना हो। ये सब आपको एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने में और मोर्टेलिटी ओवरऑल, मतलब मैं हेल्थ डॉक्टर हूँ तो इसलिए मेरे को लगता है मोर्टेलिटी से हर चीज या मॉर्बिडिटी से हर चीज को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो वो Right. डेफिनेटली होगी। ये है। Thank you so much. Some brilliant points, that has come out of this discussion. And before we leave, there are some questions from the audience, and I want to read it out. Dr. Keval, आपके लिए एक question है from हाँ जी। Naushaba Akhtar. The question is that I'm also doing research on air pollution and health in Odisha for the purpose of her PhD, and she would like to know how the length of exposure acts and what limit should be considered, because there can be more than one source, but do we have any particular limits of exposure to determine the severity of disease? So इसके basically, बारे yes, में we ज्यादा know कुछ that. आइडिया नहीं है। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बारे में आई विल से वन स्टडी हैज शोन दैट स्पाइक्स ऑफ इंक्रीज इन द एयर पोल्यूशन, इट इंक्रीजेस द मोर्टेलिटी। जैसे दिल्ली में अगर स्पाइक नहीं आ रहा है तो इतनी मोर्टेलिटी नहीं होती एज कम्पेयर टू जब वो एकदम से बढ़ता है पोल्यूशन। अभी रिसेंटली जो लैंसेट में पब्लिश हुई है स्टडी, उसके अंदर यही बताया गया कि ऑलमोस्ट जैसे ही आपका 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से एकदम एयर पोल्यूशन बढ़ता है 2.5 लेवल का, तो द मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है उस सिटी की। बस इतना ही कुछ मोटा मोटा आइडिया है, या स्टडी बेस जो अभी अपनी स्टडीज हुई है इंडिया के अंदर उसमें इतना सही मालूम पड़ा है। हाउ व्हाट लिमिट शुड बी कंसिडर, वो मैंने बताया आपको कि अपने यहाँ पे 30 माइक्रोग्राम लेते हैं इसको 2.5 को, लेकिन जो स्टडीज कहती है, यूएस के स्टैंडर्ड्स कहते हैं दैट शुड बी बिलो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होने चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, वी हैव एनी पर्टिकुलर लिमिट ऑफ एक्सपोजर टू डिटरमाइन द सिवियरिटी। इसमें कोई इसके बारे में आई कांट कमेंट, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। डॉक्टर केवल मैं पूछना चाहूंगी, जब पोल्यूशन लेवल बढ़ता है ओवरऑल, तो इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन दैट इज हैपनिंग। तो उसमें फिर हम कैसे जान पाएंगे कि बिकॉज ऑफ
if I have some health issue, it is because of air pollution. It could be because of वो other. बहुत वो गया वो एक्चुअली मैडम देखिए अनसीन एनिमी है वो आपको ये आप दिख नहीं रहा है वो चीज तो आपको नहीं मालूम पड़ने वाला जस्ट इरिटेशन ऑफ आई इरिटेशन ऑफ थ्रोट ये एक्यूट आपको सिम्टम्स मिलने वाले हैं या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यू हैव सम डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या क्रोनिक डिसऑर्डर है तो वो इंक्रीज हो जाएंगे डेफिनेटली जो स्टेटिस्टिक्स है हॉस्पिटल्स के वो आपको मदद करते हैं आप विंटर्स में देखिए बीमारियां बढ़ जाती है विंटर्स में ही पोल्यूशन क्यों बढ़ता है सोचने वाली करेक्ट। बात है गर्म हवा नहीं है तेज हवा नहीं है और नॉर्दर्न एरियाज में ही क्यों बढ़ता है साउथ में क्यों नहीं बढ़ता है वो कोस्टल एरियाज है वहाँ हवा ज्यादा चलती है तो वो पोल्यूशन को इकट्ठा नहीं होने देती वो बह जाता है तो विंटर एरिया में क्यों बढ़ रहा है ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हाँ उस समय बीमारियां जो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाते हैं वो इस समय एयर पोल्यूशन बढ़ा होता है इस कारण से बढ़ते हैं तो ये राइट। अपने कोई इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बता सकते हैं बाकी एक्यूट इंडिकेशन मतलब एक्यूट सिम्टम्स आपको बता दें कि एयर पोल्यूशन से मेरे को ये बीमारी हो गई है तो वो सोर थ्रोट हो गया कफ हो गई या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई दैट विल टेल यू कि हाँ पोल्यूशन बढ़ा है तो मेरे ये सिम्टम्स बढ़ गए Right, right. Thank you so much, Dr. Keval. We have one more question, and probably Miss Abhi, ma'am. I think this, you should answer this question. The question is, why are the levels set by the regulatory body so high? Why haven't we modified these levels to meet the latest research? So we know that, CPCB के standards अभी भी 40 microgram and 60 microgram, sorry, 60 and 100 हैं. लेकिन world WHO के जो standards हैं, they are 5 and 10. So हम क्यों WHO के स्टैंडर्ड्स नहीं अपना रहे हैं? एक्चुअली मैम ऐसा नहीं है रिसर्च कंटिन्यूअसली होती रहती है अगर उन्हें नीड लगता है क्योंकि ये बहुत एक पूरा डिफाइंड सेट ऑफ रिसर्च होता है उससे तो ये इंटरप्रिटेट किया जाता है कि हमें प्रेजेंटली हमारे क्या स्टैंडर्ड्स रखने हैं अब जैसे ऐसा नहीं है जैसे अगर आप पावर प्लांट्स की ही बात करें तो पावर प्लांट में आप इनिशियल टाइम पे देखेंगे तो स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे बट एट दैट टाइम अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो काफी स्ट्रिंजेंट हो गए हैं राइट। 150 पहले उनकी लिमिट हुआ करती थी जो प्रेजेंटली 30 पर आ गई है अच्छा। इन द केस ऑफ वंडरफुल। पर्टिकुलेट मैटर इन स्टेक्स सो आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिमिट्स भी जो है हम नीचे ला रहे हैं, लेकिन हम अचानक से WHO के स्टैंडर्ड्स अपना नहीं सकते हैं। अगर हम एमओ की साइट्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफी उसमें सारे आपको स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे जो नोटिफाइड होते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हुए स्टैंडर्ड्स पहले से ओके ओके नॉट इन द केस ऑफ एयर पोल्यूशन इट इज ऑल्सो इन द केस ऑफ वाटर पोल्यूशन Okay, wonderful. That's a positive, scenario that we are improving our standards and we are becoming stringent towards the polluting units, and that is good to know. Thank you, Miss Abhigar. Thank you, Dr. Keval, and thank you, Ram थैंक यू Prakash ji. आप सब यहाँ आए एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए जिससे we can also modify our understanding on the city. We can also upgrade our knowledge, and not only us but for the wider audience as well. Thank you so much for थैंक यू सो being मच here. Thank you so much. Thank you. थैंक यू Over to you, Shriya. थैंक यू मैम Thank you all. It's been such a wonderful discussion. We'll all be in touch with you, and we hope that this is only the beginning of a association together to work in a coordinated manner on this issue further. Thank you. I will be sharing any sort of report that's coming out of this and the recorded webinar as well. Thank you, Pratima. Thanks, everyone. थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू